एनसीसीएफ को वर्ष 2027-28 तक आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और वैश्विक बाजारों के नकारात्मक संकेतों से लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का शुभारंभ किया। श्री मोदी रैपिडेक्स ट्रेन में सवार भी हुए, जिसका नाम नमो भारत रखा गया है। पहले चरण में यह रेल साहिबाबाद के दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। प्रधानमंत्री ने आज बेंगलुरु मेट्रो के पूर्वी पश्चिमी गलियारे के 2 खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। साहिबाबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को राष्ट्र को समर्पित करना समूचे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि नमो भारत रेल भारत के उज्जवल भविष्य की झलकी है। इस रेलगाड़ी का डिजाइन इस प्रकार से तैयार किया गया है कि यह 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। श्री मोदी ने कहा कि इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत की महिलाओं की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस दशक के अंत तक अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की त्रिवेणी भारतीय रेलवे के आधुनिकी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करेंगी। निर्माण क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर बनाने के लिए भारत में निर्माण इकाई लगाने को उत्सुक हैं। भारत में लड़ाकू विमान और विमानवाहक पोत भी बनाए जा रहे हैं और नमो भारत ट्रेन पूरी तरह से भारत में निर्मित है। पुनीत, जो भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे उभर रहा है, जिसका प्रधानमंत्री ने कहा और यह भी कहना कि कुछ ही समय बाद भारतीय रेलवे का पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगा, कितने सहमत हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण कदम नजर आता है? जी अमित, जैसे आपने बताया और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय रेलवे बहुत एक देश की पूरी लाइफलाइन है और इसने बहुत देश की प्रगति में बहुत बड़ा भूमिका अपनाई है। और मुझे लगता है जो नया भारत एक उभर कर आ रहा है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग डेवलपिंग भारत, उसमें मॉडर्न रेलवेज का बहुत बड़ा रोल है। और यदि हम देखें तो ये जो आपने बताया ट्रिनिटी जो है, अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत। वंदे भारत से आप और हम सब परिचित हैं क्योंकि वंदे भारत ट्रेन मॉडर्न ट्रेन हैं, मॉडर्न इंडिया की ट्रेन हैं और वो डिफरेंट जो इंटरसिटी ट्रैवल है उसको वो फैसिलिटेट करती हैं। नमो भारत जो रैपिड ट्रांसपोर्ट है और विद इन जो बिल्कुल एक बड़ी शहर से आसपास के जो शहर हैं उनसे जोड़ती है। जैसे दिल्ली से ट्रेन यूपी के कुछ शहरों में और हरियाणा में और इसी तरह राजस्थान को जोड़ेगी। तो रीजनल डेवलपमेंट के लिए जो दिल्ली के आसपास का जो रीजन है उसको डेवलप करेगी। इसी प्रकार से जो बड़े बड़े शहर हैं तो नमो ट्रेन रीजनल ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करेंगी। और अमृत भारत का जो आपने जिक्र किया वो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है। उसके तहत करीब 1200 से ज्यादा 1200 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। और मैं बताता हूँ आपको कि जो आप अच्छी तरह आप जानते ही हैं कि जो रेलवे स्टेशन हैं उनको इस प्रकार से अपग्रेड किया जा रहा है कि वो एक एयरपोर्ट का आपको लगेगा कि जो सुविधाएं एक एयरपोर्ट में हैं वही रेलवे स्टेशन मिलेंगी। तो कुल मिलाकर यदि आप देखें तो मॉडर्न रेलवे स्टेशन, स्ट्रॉन्ग वंदे भारत की तरह ट्रेन सिस्टम और रीजनल डेवलपमेंट के लिए नमो भारत की ट्रेन, ये एक बहुत ही इफेक्टिव ब्लूप्रिंट है मुझे लगता है। और इसका जो रोल होगा आने वाले टाइम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। Puneet, the Prime Minister also said that the Namo Bharat train are indigenously manufactured. So that is also, gives push to the government's Make in India program. The government has been emphasizing and giving a lot of encouragement under this scheme. Absolutely. In fact, I think if you look at the overarching objective of promoting these huge projects, infrastructure projects, it is to create capabilities within India, to take up large projects, to create modern equipment, and therefore I think it promotes local industry, it promotes employment, it promotes infrastructure. It is truly a very integrated vision. See, these are not parts of some random parts of some scheme. This is a grand plan under which development in India and of course Make in India, manufacturing in India is the backbone
on which all these projects will be implemented. पुनीत, जिस तरह से नमो भारत ट्रेन है उसी तरह से वंदे भारत ट्रेन का भी पूरी तरह से भारत में निर्माण हो रहा है, और निर्माण ही नहीं हो रहा है, इसका बड़े पैमाने पे निर्यात भी हो रहा है और बहुत सारे देशों ने इसको खरीदने में रुचि भी दिखाई है। ये भारत की बढ़ती जो निर्माण क्षेत्र में बढ़ती भूमिका है उसको किस तरह से देखते हैं, और एक आर्थिक शक्ति के तौर पर इसकी कितनी भूमिका नजर आती है? अमित, देखिए, जो भारत की एक छवि है और आज तक जो काफी वर्षों तक छवि रही कि भारत जो है वो हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में उसकी क्षमता उतनी नहीं है, बल्कि कुछ और देश हैं जिन्होंने अपनी इस प्रकार की इमेज बनाई और हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स में मैन्युफैक्चरिंग में। यदि आप देखें, आज भारत जो है वो लड़ाकू विमान बना रहा है, वो पनडुब्बियां बना रहे हैं, हम बड़े बड़े शिप्स बना रहे हैं, और ये शिप्स ना और ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो हम बना रहे हैं, और ये सिर्फ हमारे देश की कंजम्पशन के लिए नहीं है, इसको बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो जो इसमें जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो जरूर बहुत ज्यादा अच्छी एक बेस है इसका, लेकिन मुझे लगता है जो एक इमेज है इंडिया की कि एक मॉडर्न स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया, वो हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और आने वाले 5 और 10 वर्षों में आप देखेंगे कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे हम एप्पल टेलीफोन की बात करें, चाहे हम इक्विपमेंट की बात करें, टेलीकॉम इक्विपमेंट की, या हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें, इन सभी चीजों के लिए भारत की पूरी क्षमता होगी। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक कदम है, एक ट्रांसफॉर्मेशन इमेज है। सिर्फ इसको हम अगर एक अलग अलग हिस्सों में देखेंगे तो शायद उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि एक इंडिया की छवि को पूरी तरह से बदल देगा। छवि के साथ साथ रोजगार उत्पन्न करने में ये जो निर्माण क्षेत्र में बढ़ती भूमिका है, इसको किस तरह से देखते हैं? कितने बड़े पैमाने पे यहाँ से रोजगार का सृजन हो पाएगा? अमित, देखिए, ये बात जग जाहिर है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो जॉब्स हैं वो काफी होती हैं। हालांकि इंडिया ने सर्विसेज सेक्टर को बहुत ग्रो किया है और हमारे देश में सर्विसेज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत रही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुछ हद तक पिछड़ा रहा देश भारत में। और यदि हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो सर्विसेज के आज 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 15% है। तो डेफिनेट, और वहां पर जो पोटेंशियल है बड़ी एम्प्लॉयमेंट का, वो हमने अभी तक उसको मिस किया पिछले कई दशकों में, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में देखें आप, उस पर काफी जोर दिया गया है। मेक इन इंडिया पर्टिकुलरली जो एक ब्रांड है इंडिया का, और मेक इन इंडिया उसको प्रमोशन किया गया, और उसके तहत जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि इसमें वुमेन को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। कई फैक्ट्रीज हैं जहां पर वुमेन ही एम्प्लॉय होती हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो मुझे लगता है कि जो कंप्लीट पिक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ना सिर्फ सर्विसेज तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रोवाइड जॉब्स and to provide that multiplier effect to the economy. That is important. While we still talk, Puneet, we're discussing, of course, the India's rise in the manufacturing sector. And as Amit asked you a few questions and you also explained. Now, how important, of course, like you said, manufacturing is also, major part of our GDP. How important have the government policies been in encouraging the sector, and what more needs to be done? So, Anubha, you will appreciate that India's, while manufacturing, we had some traditional strength in it, but government policies for many years were not supportive of promoting manufacturing in India. In fact, India entered into many international agreements in earlier decades, which actually compromised our manufacturing capabilities, and we started importing a lot of manufactured items and relied on them. But in last 8 or 10 years, you will see that India has started manufacturing everything from advanced equipment and to televisions and refrigerators and mobile phones. Now we are manufacturing most of these things within India. So I think it is important that from economic point of view, because it conserves foreign exchange, it provides employment, it provides multiplier effect to the entire economy. So from all those points of view, this has been important. But you will see that certain policies which have really promoted this. And I think the most important policy has been the PLI, which has really increased incentives for manufacturing sector in India. We of course need more policies in terms of simplifying ease of doing business. Regulation needs to be suitably modified to promote small and medium enterprises, because bulk of manufacturing we know takes place in India in the SME sector. And while large companies have grown, SME sector still faces a lot of challenges. I think government can
contribute more in simplifying conditions for SME businesses. And I think that will be really useful for the entire manufacturing sector. Moving on, Union Cooperation Minister Amit Shah has said that the National Cooperative Consumers Federation of India Limited, NCCF, should become self-reliant by achieving a turnover of 50,000 crore rupees by 2027-28. Addressing the board of directors of NCCF in New Delhi, Mr. Shah said NCCF should prepare a roadmap for the next 10 years to become self-reliant cooperative institution. He said the Cooperative Consumers Federation is playing an important role in fulfilling Prime Minister Narendra Modi's vision of Sahkar se Samriddhi. Mr. Shah said the ministry has taken 52 initiatives in the last 26 months to strengthen the cooperative movement in the country and increase the share of cooperatives in the GDP. He encouraged NCCF to find export opportunities for pulses purchased from farmers and ensure that such purchases are made at minimum support price. Puneet, the cooperative movement has always been very important and played a very important role in our economic development. What Cooperation Minister today said that it should aim to become a self-reliant institution. How do you look at it? So, Anubha, as you know, in India, cooperative sector has been extremely important for economic development. And we are all familiar with very large cooperatives in India like Gripco, NABARD, and similar Amul, for instance. And these have really revolutionized the way India does business. And it also touches the lives of millions of people at the grassroots level. So I think, as you know, that the Ministry of Cooperative was actually created in 2021, and it aimed to provide a certain positive environment and regulation and policy framework for cooperatives to prosper in India. And I think if we look at the way cooperatives have been growing, and particularly agricultural credit societies, and I think that is where government is really emphasizing that we should be able to provide and integrate agriculture credit societies into the cooperative framework. That is where the real inclusive growth will come for villages, for farmers, and for people on the fringes of society. So cooperative is the way forward for economy to grow at those levels. Of course, we have the corporate structure in India, we have the PPP, but I think cooperatives are equally important as the other important pillars of the economy. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना देश में वित्तीय समावेश के सबसे बड़े माध्यम के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि जनधन खातों ने कोविड-19 की महामारी के दौरान गरीबों के खाते में सीधे पैसा भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में आज कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने डिजिटल व्यवस्था के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ी है और नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ है। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को धीमी वृद्धि दर, मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पुनीत, बहुत संक्षेप में जो ये डिजिटलीकरण जो हुआ है इसका फायदा सबको नजर आता है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने और एक तरीके से विकास करने में इसकी कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं आप? देखिए अमित, इसका मुझे लगता है जो डिजिटल ग्रोथ हुई है इंडिया में, उसका जो जैम जनधन अकाउंट्स, मोबाइल और आधार, इसका जो इंटीग्रेशन हुआ, और वो भी विजन एक थी कि भाई इसको इंटीग्रेट करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे जो सुविधाएं हैं डिजिटल इकोनॉमी की वो सभी को मिलेंगी, और सब, चाहे वो गांव हो, चाहे वो दूर दराज के इलाके हो, वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज कर सके, उसका फायदा उठा सके। और मुझे लगता है कि हम कितना भी तारीफ करें वो कम ही पड़ेगी जो हम यदि देखें कि जो इसका फायदा हो रहा है देश में, और ना सिर्फ भारत में, यदि आप देखें तो पूरे विश्व में इसको सराहा जा रहा है, and many countries want to adopt a UPI-like system now. Puneet, in the same event, like Amit just said, that Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das, he said that global economy is now facing a triad of challenges like slower growth, inflation, and risk of financial instability. And even though inflation for the month of September is now under, in the comfortable zone of RBI, but the RBI governor raising these points, how important is this? Anubha, I'm sure we'll come to this point in detail later also, but I must say that while India, and everybody is saying it, IMF has said this and World Bank has said this, while India is in a sweet spot globally, but the truth is that the global macroeconomic conditions are very, very challenging. We have high interest rate regime, high inflation, employment is falling in certain geographies like Europe.
economic development is slowing down, and global economy, I think, is facing enormous challenges right now. Going forward, I'm worried. I think that it will be a difficult time for the economies to prosper. Of course, we need to be cautious about it, and I'm glad that RBI is conscious of it, and they're going to make policies which are supportive of growth. India, of course, has fewer challenges, except we know that we import certain inflation, so like high oil prices, and these really affect our financial conditions. But mostly India is in a better condition, but global economies have a huge challenge. नजर डालते शेयर बाजार पर। वैश्विक बाजारों के नकारात्मक संकेतों से घरेलू शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट का दौर रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.4% की गिरावट से 232 अंक लुढ़क कर 65,398 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.4% के नुकसान से 82 अंक गिरकर 19,543 पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में लगभग 1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% का नुकसान दर्ज हुआ। Key domestic stock indices ended lower for the third straight day amid negative cues from global share markets. The BSE Sensex closed below 65,400 mark, while the NSE Nifty ended below the 19,550 level. The Sensex declined by 232 points or 0.35% to finish the week at 65,398. The NSE Nifty slipped 82 points or 0.42% to settle at 19,543. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell 1.02% and the small-cap index slipped 0.76%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 10 companies appreciated while 20 companies declined. Kotak Bank climbed 1.8%, IndusInd Bank gained 1.4%, and TCS rose 1.1%. On the other hand, ITC declined 2.7%, Tata Steel fell 2.2%, and Hindustan Unilever slipped 2.1%. In sectoral indices at the BSE, all sectors witnessed losses. Oil and gas and consumer durables both declined 1.7% each. Metal fell 1.5% and telecommunications slipped 1.4%. The overall market breadth was negative as shares of 2,329 companies declined, while those of 1,375 companies gained. A total of 132 company shares remained unchanged. Puneet, do you think that what is happening right now, like we said, our domestic indices, the domestic markets are also taking cue from what's happening globally. So do you think the markets are still looking for a clarity, in terms of what's happening, geopolitically? They are looking for a clarity to take a certain direction, and that is why we're seeing such a lot of volatility. So, Anubha, you are right. I mean, markets are in India particularly, markets are in a bit of a confused state because we seem to have a lot of positives on the domestic front, but the global environment is very, very negative. So I think it creates a certain kind of a confusion in investors' mind whether they should stay invested or they should take some money off the table. Having said that, if you look at global conditions, in USA, the 10-year yield is now touching almost 5%, which is a 23-year high. So you can imagine if those interest rates in USA are at the highest levels in the last 20-25 years, then the kind of impact it will have on the economic development in the long term. Also, it will hurt home buyers, consumers. It will definitely cause a lot of difficult conditions for manufacturing sector, for companies, corporate sector. So I think globally, and this is impacting almost every sector of the economy. At the same time, we have conditions, geopolitical conditions, which are negative. So in Europe, in Middle East, you have tensions which are rising, and which will create further pressures on liquidity as well as on risk environment. So the risk premium goes up. So all these things, if you put together, I think we have a pretty difficult time ahead for the global economy. India, of course, will also be affected. So I'm not in that camp which says that we can continue to grow, ignoring what is happening on the global stage. India will be affected, of course, to a lesser extent, but definitely if we see foreign investors selling heavily in India, if we see less money coming into India for investments, then our economy will also slow down. Of course, we will not be hurt as badly as Europe or Middle East, but we will be definitely witnessing a slowdown in economic growth in India over the next year or so. पुनीत, अगर मोटे तौर पे देखें तो जब से ये मध्य पूर्व एशिया में इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है, तब से अगर हम पूरे शेयर बाज़ार को देखते हैं, वैश्विक बाज़ारों को जहां ज़्यादा झटका लगा है वहां भारतीय बाज़ार लगभग
उससे प्रभावित तो हैं लेकिन उतना नहीं। क्या मानते हैं कि जो घरेलू कंपनियों का जो दूसरी तिमाही का नतीजे हैं उसका समर्थन है? भारत की खुद की जो कंजम्पशन है वो इतनी मजबूत है, भारत की अर्थव्यवस्था ने में भी उसको बहुत बड़ा सहारा दिया हुआ है, और इसके बावजूद अगर जिस तरह से अभी आशंकाएं हैं कि ये संघर्ष अभी रुकता हुआ नजर नहीं आता, ये संघर्ष जैसे बढ़ाएगा तो शेयर बाजार और वित्तीय व्यवस्थाओं पे कितना दबाव आपको और पड़ता हुआ नजर आता है? अमित, देखिए, मुझे लगता है कि जो कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है आने वाले 1 या 2 वर्षों के लिए, वो काफी डिफिकल्ट रहने वाली है। लिक्विडिटी को लेकर भी, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर भी, इन्फ्लेशन को लेकर भी। इन्फ्लेशन आराम से नीचे नहीं आएगा, पर्टिकुलरली जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो भी इन्फ्लेशन को बढ़ाती है। तो मुझे लगता है कि ये कंडीशंस, ग्लोबल कंडीशंस हमारे सामने रहेंगी, करेंसी पर भी दबाव बन सकता है। तो इससे जो भारत जैसी अर्थव्यवस्था है, जो हम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ग्रो कर रहे थे, 7% या उससे ज्यादा, तो वहां पर हम थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन अगर हम देखें तो भारत की जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है या डोमेस्टिक कंडीशंस हैं वो काफी स्टेबल है, हमारा फिस्कल डेफिसिट भी काफी स्टेबल है, और इंटरेस्ट रेट्स में भी कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो यहाँ पर हमें कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम कुछ समय तक, और देखिए ये सब कंडीशंस हमारे सामने आ रही हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं, जब शेयर बाजार कह लीजिए आप, या जो ऑप्टिमिज्म है, इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म है, वो अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है, तो वहां पर डेफिनेटली रिस्क बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशियस होना, थोड़ा केयरफुल होना यहाँ पर अच्छा रहेगा, और हम यहाँ पर रेकलेस ना हो बाजारों को लेकर या इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर। Puneet, of course, like you just said, that every sector of the economy is being affected by what's happening, But if we talk about which sectors are likely to be less affected by this volatility? So, Anubhav, what we are seeing is that consumption in India continues to be very strong. Of course, we earlier had seen some slowdown in rural consumption, but that has started picking up now. FMCG companies are saying that consumption, rural consumption is also picking up. We have seen urban consumption growing very strongly. In fact, all the real estate and automobiles have been very strong. So, if you really ask me, I think consumption is going to be still good in India. Therefore, sectors like real estate, automobiles, FMCG, white goods, I think they're going to be strong. Financial sector will face some challenges, but I think even financial sector, particularly banks and particularly PSU banks, which are very strong franchise, with a very strong deposit franchise, I think those sectors will also be relatively less affected. They will continue to do well, and the valuation is also okay in those areas. मुद्रा बाजार में नजर डालते हैं। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 83 रुपये 12 पैसे के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 106.2 के स्तर पर रहा। और अब एक नज़र एशियाई यूरोपीय बाजारों पर। मध्य एशिया में युद्ध के बढ़ते प्रभाव से एशियाई बाजारों में आज गिरावट का दौर रहा और बाजार लगभग 11 महीनों के निचले स्तर तक लुढ़क गए। दक्षिण कोरिया का उस पे 1.7%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.8%, सिंगापुर और हांगकांग के शेयर सूचकांक 0.7% तक की गिरावट से बंद हुए। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में आज मंदी का दौर रहा। सूचकांक लगभग 3 महीनों के निचले स्तर तक लुढ़क गए। लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक सत्र के दौरान 0.9% से 1.2% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। पुनीत, अगर पूरा एशिया, यूरोप और साथ में अब भारतीय बाजारों को भी इसमें जोड़ें, यहाँ की सूचकांक में लगभग 0.5%, लेकिन वहाँ 1.5 से 2% तक का जो दबाव है, ये कितना और अभी बढ़ेगा, या भारतीय बाजारों को इससे कितना एक नकारात्मक असर पड़ेगा? अमित, देखिए, जब यदि आपने जितने बाजार बताए और जितनी बड़ी स्टॉक मार्केट हैं, वहां पर हमने काफी अच्छी गिरावट देखी है। और कुछ बाजार, जैसे आपने कहा कि वो तो 11 महीनों के निचले स्तर पर आ गए, यूरोपीय बाजार 3 से 4 महीनों के निचले स्तर पर है, तो मुझे लगता है कि वो उसका असर और सेलिंग प्रेशर भारतीय बाजारों में बढ़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो इन्वेस्टर्स यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय बाजारों में ये शॉर्ट टर्म में ये प्रेशर और बढ़ेगा। तो यही कारण है मैंने ये कहा कि भाई इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और थोड़ा दे शुड टेक सम मनी ऑफ द टेबल। जी। Moving on to the US markets, US stock markets declined yesterday amid worries over rising US Treasury yields and the Israel-Hamas war potentially growing into a wider conflict in the Middle East. Further,
Federal Reserve Chairman Jerome Powell said additional rate hikes could be warranted in view of economic resilience and labor market tightness. The statement of the Federal Reserve Chairman increased risk aversion among traders. The Dow Jones Industrial Average fell 0.8%, the S&P 500 lost 0.9%, and the Nasdaq Composite declined around 1%. Puneet, how do you view this statement by Jerome Powell? Although he's admitted that yes, the economy, because of the pause, the steps taken by the US Fed in the last few months, the economy is improving, the inflation is coming under control, but he still says that their aim is still to bring inflation down to 2%, and so therefore not denying the chance of another rate hike or more rate hikes. Yeah, Anubhav. So clearly conditions in US and some markets, major markets, are they need higher interest rates. And definitely there may be one or two rate increases, but I think interest rates will continue to rule higher for much longer, maybe for next 1.5, 2 years, which is more difficult to deal with for companies. So I think the conditions are not benign for these economies, and definitely they will need to tighten their belts further to keep inflation under control. Otherwise, it will go through the roof. And a very brief comment on you. The US dollar has been strengthening quite a bit because of whatever is happening around the world and the economic conditions. How do you see it impacting the global economy? Is it a big risk? Oh, it's a huge risk. In fact, RBI governor has pointed that out, that a strong dollar is one of the biggest risks to stability of smaller economies. And I think dollar will continue to be strong if US Fed keeps interest rates higher, or they might increase the rates. Then I think it will become quite a challenge. Moving on to commodities, Brent crude prices today rose more than 1%. In intraday trade, the Brent crude was trading at $93.53 per barrel. Western Texas Intermediate crude price was trading at $90.60 per barrel when reports last came in. पुनीत, बहुत संक्षेप में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको भी पता है, कच्चे तेल में अभी कितना दबाव आपको नजर आता है और पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर? देखिए अमित, कच्चे तेल की कीमतें बहुत वोलेटाइल हैं और बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। यदि जो मिडिल ईस्ट की वॉर है उसमें कोई भी ऐसा टर्न आता है कि ये वॉर बढ़ने के आसार बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है ऑयल प्राइसेस और बढ़ेंगे। पर्टिकुलरली ईरान की तरफ हमें नजर रखनी होगी। अगर उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट होती है तो ऑयल प्राइसेस में काफी तेजी आ सकती है। ये बहुत बड़ा रिस्क है अभी मार्केट का। नजर डाल लेते हैं सरफा बाजार में। मंडली कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना 385 रुपए की मजबूती से 60,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पे रहा। चांदी 725 रुपए बढ़कर 72,340 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजार में सोना बढ़त से $1,994.21 प्रति औंस और चांदी $23.38 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। हालांकि सोने के बारे में बहुत सारी चीजें जानना चाहते थे, लेकिन समय की बाध्यता है। पुनीत, फिलहाल कार्यक्रम में शामिल होने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अमित। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Trinity of Amrit Bharat, Vande Bharat and Namo Bharat will transform Indian Railways, says Prime Minister Narendra Modi. National Cooperative Consumers Federation of India Limited, NCCF, should become self-reliant by 2027-28, says Union Cooperation Minister Amit Shah. And key domestic indices end low for third straight day amid negative cues from global share markets. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 6:30 p.m. Till then, from the entire team, Namaskar. Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. This is Akashvani, the news read by Navneet Singh. Prime Minister Narendra Modi launched the country's first Regional Rapid Transit System RRTS at Sahibabad in Uttar Pradesh today. He inaugurated the priority section of the RRTS corridor, which will cover the distance of 17 kilometers connecting Sahibabad to Duhai depot with stations at Ghaziabad, Guldhar and Duhai on the way. Mr. Modi flagged off the RapidX train connecting Sahibabad to Duhai depot, marking the launch of RRTS in India. This is the country's first RapidX train, which will be known as Namo Bharat. Mr. Modi